हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्रीराम स्वागत करता हूं आप सभी को अपने प्यारे से चैनल जेनजी IITian में। द टॉपिक ऑफ टुडे पॉडकास्ट इज द मोस्ट डिमांडिंग सिंस एवर आई हैव स्टार्टेड माय यूट्यूब जर्नी। आज हमारे साथ हैं आफरीन दी, none other than Joint Secretary Placement Cell at IIT Madras and the student of BS Degree in Data Science। सबसे पहले मैं दीदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। एंड आई वुड लव कि दीदी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। Thank you so much, Shriram, for that warm welcome. थैंक यू सो मच। Thank you for having me here. In fact, I'll be glad to share all my experiences I've had in the student placement council so far. So दीदी, सबसे पहले आपने इस डिग्री को कब ज्वाइन किया था एंड आपको कैसे पता चला था कि ये डिग्री का कुछ फ्यूचर हो सकता, और इस डिग्री को ज्वाइन करते टाइम आपका एक्सपेक्टेशन क्या था? अगर मैं बताऊं मैं इस डिग्री को कब ज्वाइन की हूँ, तो मैं सेकेंड बैच की स्टूडेंट हूँ। तो मैंने इसको ज्वाइन किया था जो मई टर्म होता है 2021। तो मैं सेकेंड बैच की मई टर्म 2021 की स्टूडेंट हूँ। मुझे ये डिग्री पता चला था, आई हैड अ फ्रेंड in IIT Madras already. So she's pursuing MTech. She was pursuing MTech plus PhD here. तो उन्होंने बताया था मुझे इसके बारे में. So I came to know it from her, and she told me, she asked me to give it a try. Though I was a little skeptical about कि सही होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा and all. थोड़ा सा था, लेकिन since I had बचपन से ही ना, मतलब थोड़ा मैथ्स की तरफ, नहीं IIT वाला मेरा वो नहीं था उतना कुछ, like I was not that craze, I did not have that craze about IIT or something. So that was there in my family though, but I did not have. So but वो maths की तरफ एक जो inclination होता है ना मेरा, तो I had that inclination towards maths right from my childhood. So तो बस उसी की वजह से मैंने सोचा चलो दे ही देते एक ट्राई, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, अच्छा नहीं लगा तो देखा जाएगा. बट वाइल इन आवर टाइम, अभी तो शायद नहीं होता, इन आवर टाइम वी यूज्ड टू हैव दोस क्वालिफायर एग्जाम्स. सो क्वालिफायर से पहले, अभी भी क्वालिफायर तो होता है, बट क्वालिफायर से पहले वो लोग 1 महीना ट्रेनिंग करवाते थे. अभी भी वही है. अभी भी है. अच्छा, तो 1 महीना ट्रेनिंग करवाते थे, एंड दैट entire process made me fall in love once again with all the mathematical calculations that I was doing at that period. So I think मुझे लगा चलो यही है, मुझे यही करना है. और उस टाइम आप कोई और डिग्री कर रहे थे, परस्यू कर रहे थे? हाँ, मैं मास्टर्स कर रही थी. मेरा मास्टर्स है बॉटनी में. ओके. क्या अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि कैसे फाउंडेशन से BS डिग्री तक का सफर था और बीच में अप्स एंड डाउन आए होंगे? अ ब्रीफ जर्नी. अगर मैं अपना ब्रीफ जर्नी बोलूं तो सी, अप्स एंड डाउन्स तो बहुत सारे बम्प्स तो रहे हैं, because this degree is not easy. Like people might be thinking this is done completely virtually, so एक edge नहीं होगा, but I'm telling you, whoever has gone through, I'm in my BS level right now, so I'm in the first term of my BS, so next term मैं complete 4 साल complete हो जाएगा, so I'll be holding the BS degree after that hopefully. So but that's why I would say कि this degree का जो curriculum है, it's very rigorous. तो bumps तो काफी सारे आए. फाउंडेशन में I would say the toughest which student will face was is stats 2 और Python. Python तो ठीक है, because Sudarshan sir is there to teach everything. मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ा दिया. That was the best part. बहुत अच्छे से, like अगर मुझे लग रहा है अगर सुदर्शन सर Python ना पढ़ाते तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होता सबको कोडिंग में, but he made it very nice there. Stats 2 was like, it's a good subject I would say. बहुत अच्छा था. I loved stats 2 very much in that, but थोड़ा सा difficult है उसको करना. तो stats 2 maths 2 पे सबको थोड़ा सा focus करना होगा. Talking about diploma, this is the toughest of all the levels I would say. So be very mindful when you are in the diploma level. Do not take it very lightly as people do. And maybe I have also done some mistakes and I have learned from it. तो डिप्लोमा सबसे टफ लेवल है और डिप्लोमा सबसे इम्पोर्टेंट है. हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीजें बेसिकली इसी लेवल पे सिखाया जाता है. वी हैव कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स BDM का, जो बहुत बहुत ज्यादा नेसेसरी है. वो जो हमें स्किल्स देता है ना, द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू बिल्ड एंड रियल टाइम में कैप्स्टोन प्रोजेक्ट जो है, इट्स लाइक वेरी गुड. तो इंडस्ट्री लेवल पे भी अगर आप वो प्रोजेक्ट बहुत सीरियसली करते हो तो बहुत सारे स्किल्स आप गेन कर लेते हो, एंड इट्स वेरी गुड. देन मैट टू प्रोजेक्ट, दैट इज लाइक बहुत अच्छे लेवल का, उम्दा लेवल का प्रोजेक्ट है, बट इट डज गिव यू नाइटमेयर, आई एम टेलिंग यू. तो बट ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको सीरियस होना पड़ेगा. BSc level, because we have grilled so much in the diploma level कि BSc फिर easy लगने लग जाता है हमें. तो BSc was quite smooth for me.
डीएल थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा पूरे बीएससी में. डीएल वाज अ गुड सब्जेक्ट एंड अ लिटिल डिफिकल्ट आई वुड से बीएससी में, थर्ड ईयर जो मैं बोल रही हूँ. एंड अभी तो मैं बीएस में हूँ, तो अभी मैं देख रही हूँ. आई कैन ओनली टेल यू अबाउट बीएस. अभी मेरे 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें से एवरीथिंग इज गोइंग प्रीटी वेल. एलएलएम बहुत अच्छा है, नितेश सर लेते हैं, तो ही टीचर्स वेरी नितेश वेल. खापरा सो यू सर। शुड. नितेश कपड़ा सर, यस. सो बहुत अच्छा है. इज लाइक यू विल गेट एडिक्टेड टू हिज लेक्चर्स. एंड आईबीडी बिग डेटा, इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा, वो थोड़ा डेटा इंजीनियरिंग साइड के लिए मैंने लिया था. सो सब कुछ अच्छा है. लाइक इस डिग्री में आपको बेसिकली एक डेटा सेट, देखिए दिस इज द फर्स्ट जो आपके पास हो रहा है एज अ प्रॉपर डेटा साइंस का डिग्री, जो है पहली बार हो रहा है ये. तो इसमें आपको वो सारी चीजें सिखा दी जाती है जो आपको चाहिए. तो द करिकुलम को उतना लाइटली नहीं लिया जा सकता. इट्स वेरी गुड इफ यू गो थ्रू लाइक सिस्टम कमांड्स. So they give you a gist of everything, whatever you need right now for industry. इंडस्ट्री में जाके आपको जो काम करना है वो एक रियल एक्सपीरियंस आपको यहाँ से मिल जाए. मैंने एक चीज नोटिस किया है कि इसका जो सिलेबस है बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट है. जैसे मैं अपने एक डाटा साइंस के स्टूडेंट से बात कर रहा था, मैंने पूछा कि उसके सिलेबस में स्टेट्स कब आएगा, तो उसने बोला कि उसके सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में उसमें स्टेट्स इंक्लूडेड है. तो मैंने बताया कि हमारे आईआईटी मद्रास में फर्स्ट ईयर के सेकेंड टर्म ही आपको मिल जाएगा, है ना. तो ये है कि यहाँ पे और जो अच्छे सिलेबस है लेवल पे है हमारा अच्छे लेवल स्टैट्स. पे है. या मैं भी अपना मैथमेटिक्स को कंपेयर करता हूँ अपने कॉलेज के, तो वेक्टर वहाँ पे भी पढ़ाया गया है, डिफरेंशिएशन वहाँ पे भी पढ़ाया गया है, लेकिन जिस लेवल से कॉन्सेप्ट हमारे बारे में इन डेप्थ पढ़ाया गया है, वो हमारे कॉलेज का सिलेबस नहीं है. तो जो हाँ, सिलेबस है वो अगर हम, बहुत ही अच्छा है. हाँ बिल्कुल सही बात है. बिकॉज अगर हम कंपैरिजन करने बैठे तो हमें ये डिफरेंस दिखता है, वरना अगर हम बस पढ़ते जा रहे हैं ना, तो या हमें पता नहीं चल रहा कि हम कितनी अच्छी हम्म. अच्छी चीजें सीखते जा रहे हैं. और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था. मैंने मतलब कि स्टार्टिंग अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग मेरे को अच्छा लगा था. बहुत अच्छा जिस तरह से मैंने पढ़ा कंप्यूटेशनल थिंकिंग, क्योंकि हमें पहले लगता था, क्योंकि मैंने इससे पहले किसी तरह का कोडिंग मेरे को एक्सपीरियंस था नहीं. तो जिस तरह से उन्होंने कंप्यूटेशनल थिंकिंग को इंट्रोड्यूस किया बिफोर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि मुझे यही पता था कि जब कॉलेज जाते हैं तो मतलब सीनियर्स वगैरह भैया लोग बोलते थे कि पाइथन या सी कुछ स्टार्ट होगा. तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. और फिर पाइथन में जिस तरह से सुदर्शन सर ने पढ़ाया, अभी तक लगा दिस इज हाउ आईआईटीएन प्रोफेसर टीच, है ना. वो बहुत अच्छा लगा था मेरे को. बहुत अच्छा सुदर्शन एक्सपीरियंस सर था. तो इस फैबुलस आई वुड से. उनके वजह से लाइक कोडिंग थोड़ा सा ना सबका मतलब हाथ बैठ गया उसमें. और मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि वो जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में भी आपने बोला, कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है. वो जो सीरो कोडिंग करके हम आए हैं फिर या पाइथन तक, सारा तो का वो सारा भी कॉन्सेप्ट. बहुत एक बड़ा रोल प्ले, हाँ तो वो और बहुत बड़ा रोल किया है पाइथन को जल्दी से ग्रास्प करने के लिए. हैट्स ऑफ टू द जिसने भी स्ट्रक्चर को बनाया, हैट्स ऑफ टू देम. लाइक दे हैव जस्ट मेड इट परफेक्ट, परफेक्ट जैसा होना चाहिए. तो अगर मैं आपसे फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए पूछूं कि कैसे, आपने बोला कि स्टेट्स टू हार्ड होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर मेरे को भी रिव्यू था कि बहुत ही हार्ड होता है. और दूसरा पाइथन में जीआरपीए, है ना. पाइथन सब कोई पढ़ पाता है, लेकिन पाइथन में जीआरपीए का जो करेक्ट आंसर होता है उसको लिखने में बहुत को दिक्कत होता है. तो इन दोनों पे आपका मैं सजेशन मांगूंगा. तो सबसे पहले मैं स्टैट्स 2 के बारे में बोलती हूँ कि स्टैट्स 2 देखिए, मैंने भी सुना था बहुत टफ है, बहुत टफ, ठीक है. बट आई हैव एन एस इन दैट. तो मुझे भी बहुत डर था. तो वो डर के चक्कर में जो नहीं होता है कि ज्यादा पढ़ लेते हैं हम्म. कि अरे बहुत टफ है तो पढ़ लेते हैं, मुझे लग रहा है कि द कोर्स इज जस्ट सफिशिएंट. मैंने कोई मटेरियल्स नहीं रेफर किया था, कुछ भी नहीं. इट वाज जस्ट फ्रॉम द लेक्चर्स. यही कि मैंने लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा था, लाइक अच्छे से नोट्स बना के. मैंने स्टार्ट्स 2 का प्रॉपर नोट्स बनाया था, नोट्स बना के देखा था. तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है. बस हाँ, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा. यही कि यू हैव टू सिट. कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि 40 मिनट्स का लेक्चर है, लेकिन मुझे 1.5 घंटा लग गया उसको समझने में. स्टार्ट्स 2 के साथ तो ये म्यूजियम हुआ था. बहुत सारे लेक्चर्स है जो मैं 1.5 मिनट 2x पे रख के देख लेती हूँ. मेरे साथ बट भी स्टार्ट्स 2 के साथ ये मेरे साथ नहीं था. स्टार्टिंग हाँ, में आई थिंक स्टेट्स वन में भी हुआ था, ये सीटी में मेरे साथ हुआ था. क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ स्टार्ट्स 1 तरह तो मुझे हुआ था जब मैंने क्वालिफायर जर्नी में अच्छा. स्टार्ट किया था, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, अभी नहीं. जब मैंने क्वालिफायर में, हाँ क्योंकि हमारे स्कूल में जिस तरह से स्टेट्स पढ़ाया गया था वो तो नॉर्मल था, है ना. लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में मैं स्टेट्स को स्टार्ट किया गया था. एंड सेम विद हाँ कंप्यूटेशनल बहुत. थिंकिंग. मैंने बार बार उनके ट्रांसक्रिप्ट वगैरह को पढ़ने का ट्राई किया था. हम्म. हाँ. और व्हाट अबाउट पाइथन जीआरपीए? पाइथन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग. आप सर के लेक्चर्स को देखो. इतना अच्छा लेक्चर्स तो मुझे लगता नहीं है कहीं पे आपको मिलेगा पाइथन का. आप लेक्चर्स को देखो.
देख के साथ में कोड करो। तो पाइथन तो पूरा पूरा आपका प्रैक्टिस के ऊपर। आप वो लेक्चर 100 बार भी देख लो तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो वो आपको हैंड्स ऑन लेकर के, मुझे पता है स्टार्टिंग में, बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम अ कोडिंग बैकग्राउंड, तो मेरे लिए पहली बार कोड करने बैठना बहुत ही एक उलझन सा लगता था, टीडियस। इट यूज्ड टू बी वेरी टीडियस फॉर मी टू स्टार्ट कोडिंग, बट वो हाथ ही नहीं बैठता था। बट वही ना, आपको करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, एंड देन वो लाइफस्टाइल हो जाएगा एक टाइम पे। एंड मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि भैया आप सबसे पहले क्या प्रीफर करना चाहोगे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग या डिप्लोमा इन डाटा साइंस, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और आपको क्या लगता है कि पहले क्या लेना चाहिए एज जनरल स्टूडेंट? ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि पहले, देखिए ये कम्प्लीटली डिपेंड्स, क्योंकि एक डिप्लोमा के बाद आप इंटर्नशिप में बैठ पाओगे, ठीक है। तो आपको एक डिप्लोमा हो जाएगा तो यू कैन सिट फॉर इंटर्नशिप। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं डेवलपर के साइड जाना चाहता हूँ और मुझे एक ऐसा इंटर्नशिप बैक करना है जो मुझे डेवलपमेंट के साइड ले जाए, तो आप पहले प्रोग्रामिंग वाला कर लीजिए, क्योंकि आपको उसकी स्किल्स आ जाएंगे फिर। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे थोड़ा मशीन लर्निंग की तरफ, डेटा साइंस की तरफ जाना है और मुझे वैसे इंटर्नशिप्स चाहिए, तो आप वैसे अपना प्लानिंग कर सकते हैं कि चलो पहले मैं डेटा साइंस वाला कर लूं, या आप मिक्स करके भी कर सकते हैं। लाइक इफ यू आर नॉट इन अ हरी तो आप दोनों को मिक्स करके करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या करना है। बहुत जल्दी इंटर्नशिप का आपको जल्दी है, 2 टर्म में इंटर्नशिप मुझे लेना है, तो आपको एक चूज कर लीजिए, वो भी चूज कर लीजिए इस डोमेन पे कि अच्छा मुझे इंटर्नशिप डेवलपर रोल का चाहिए, वेब डेवलपमेंट की साइड चाहिए, तो फिर आप प्रोग्रामिंग कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं डेटा साइंस की तरफ मुझे रोल चाहिए, तो फिर आप डेटा साइंस का कर लीजिए। सबसे पहले अपने आप को डिसाइड करना है कि हमें किस फील्ड में जाना है ना, उसके बाद हम लोग उसके तरफ से चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने देखा था कि आईआईटी मद्रास के उसमें डॉक्यूमेंटेशन में लिखा था कि आईआईटी मद्रास प्रीफर करती है जो दोनों डिप्लोमा कर रहे होते हैं उनको इंटर्नशिप देने के लिए सबसे पहले। तो ऐसा कुछ होता है कि वो प्रीफर करती है स्टूडेंट्स को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बस एक डिप्लोमा हो जाना चाहिए। अब देखिए, अगर आपने डेटा साइंस में कर रखा हो तो ऑफ कोर्स आपका जो प्रोफाइल है, आप मान लीजिए प्रोग्रामिंग के प्रोफाइल से आपको सूट नहीं करने वाले, है ना, तो उधर से आपको चांसेस थोड़े कम मिल जाते हैं। लेकिन आपको वो सिर्फ डेटा साइंस वाले आप चूज कर रहे होते हैं, आपने दोनों डिप्लोमा एक साथ जाकर के बहुत टाइम लेकर के कंप्लीट किया है, तो आपके लिए दोनों प्रोफाइल रेडी है। बस यही डिफरेंस, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेफरेंस वाली बात नहीं है। वो जैसी जेडी आती है, उस जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसा कंपनी से हमें जॉब डिस्क्रिप्शन आती है उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग। अब वो डिपेंड करता है आपका कितना स्किल्स है, किसमें क्या स्किल्स है, तो ऐसी प्रेफरेंस वाली बात नहीं है। अब देखिए, आपने अगर दोनों चीज कर रखा हो, आपके पास डेटा साइंस का भी स्किल्स है और आपके पास प्रोग्रामिंग का भी स्किल्स है, तो ऑफ कोर्स ज्यादा ऑलमोस्ट सारे जेडीज आपके लिए बन जाते हैं। तो वैसा ही कुछ हो जाता है। और फिर कंपनीज को भी एक लगता है, मतलब अगर आपने दोनों किया है तो रियली आपके पास बेनिफिट तो रहेगा ना, क्योंकि आपने दोनों किया है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट। अब डिपेंड करता है कम्प्लीटली वो कंपनी क्या चाह रही है। अगर कंपनी को प्रोग्रामिंग विद लिटिल बिट ऑफ मशीन लर्निंग नॉलेज चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो देखना चाहेगी कि उधर आपने क्या कर रखा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी मशीन लर्निंग की तरफ है या डेटा साइंस की तरफ है, तो वो चाहेगी कि डीएसए का थोड़ा नॉलेज चाहिए, तो वो देखना चाहेगी। कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोफाइल चूज कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच दी अपने जर्नी को बताने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पार्ट पे मूव होने वाले हैं, जहाँ पे बच्चों का सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन आने वाला है। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे डाउट पूछे थे रिगार्डिंग प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप, एंड आई वुड लव इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला है कि एज अ जनरल अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है बीएस डिग्री, स्टैंडअलोन स्टूडेंट, तो आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री की तरफ से स्टैंडअलोन स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रेफरेंस है, मतलब वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं स्टैंडअलोन स्टूडेंट्स को इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स या इंटर्नशिप? सब कुछ ऐसे करते हैं, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि आप स्टैंड अलोन है तो आपके पास कम एडवांटेज है, मतलब आप स्टैंड अलोन है तो आपके पास कम एडवांटेज है या ज्यादा एडवांटेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब था कि कोई स्टूडेंट जो कि इस डिग्री को स्टैंड अलोन कर रहे हैं, तो क्या उनके पास एक ग्रेटर चांस रहता है प्लेसमेंट या इंटर्नशिप को क्रैक करने का? इस तरह का भी कोई प्रेफरेंस होता है? देखिए, अगर आपने जो भी इस जर्नी में पढ़ा है, अगर आपने अपने स्किल्स को बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर लिया है, आपके पास वो सूटेबल स्किल्स है जो एक कंपनी रिक्वायर करी है, जो ये डिग्री अच्छे से दे देती है, आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है, तो आई थिंक क्यों नहीं प्रेफर करेंगे आपको। और ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे यहाँ जो स्टैंड अलोन स्टूडेंट्स है, अच्छी अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, अच्छे अच्छे इंटर्नशिप्स मिले हैं उनको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच जी। मैं स्टूडेंट्स को बार बार एक चीज बोलती हूँ, ओपन सेशन हो रहा था उसमें मैं यही बोल रही थी कि
डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि मेरे पास ये डिग्री नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं स्टैंड अलोन, ये सब मत सोचिए आप लोग अपने स्किल्स पे फोकस करिए। एक रोल देखिए, मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि एक रोल सिलेक्ट करिए। आप उस रोल के बेसिस पे आप अपने आप को अपस्किल करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आपके पास जितना स्किल्स होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे इंटरव्यू में आपको सक्सेस होने का। देन इट ऑल डिपेंड्स कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, है ना। हमारे बैकग्राउंड या हमारे किसी भी तरह के, हम मेरे पास कौन सा डिग्री है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इस बीएस डिग्री जर्नी में किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, दैट विल ओनली मैटर। Yes. So, some questions are asked by our students. First of all, on the IIT Madras BS website placement section, it states that once our student accept an offer, our placement internship process will be deemed complete with them and no further assistance will be provided. Could you please clarify the statement? सबसे पहला, does a student who secured an internship still receive placement opportunities or support from IIT Madras? सी, आपने भी बोला कि एक स्टूडेंट को अगर अभी इंटर्नशिप मिल जाती है, प्लेसमेंट मिल जाती है तो बंद हो गया प्लेसमेंट। तो द थिंग है, मैं पूरा चीज बता देती हूँ। एक्चुअल सिनेरियो क्या है कि इफ अ स्टूडेंट गेट्स वन इंटर्नशिप, इफ दैट स्टूडेंट गेट्स वन इंटर्नशिप, सो अब और हम इंटर्नशिप नहीं देते हैं, बस मतलब हमारे तरफ से एक इंटर्नशिप हो गया। बट ऑफ कोर्स अ स्टूडेंट कैन ऑलवेज सिट फॉर प्लेसमेंट। ओके, क्योंकि उन्हें फिर से वो प्लेसमेंट ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। देखिए, आप पहली बात है कि इंटर्नशिप के लिए कब एलिजिबल होते हो? यू आर एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप्स जब आप एक डिप्लोमा कर लेते हो, ठीक है। सो अब आपको इंटर्नशिप मिल गई, नाउ यू आर स्टडीइंग, वंस यू कंप्लीट योर बीएससी, तो बीएससी लेवल के बाद यू बिकम एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट्स। इसके बाद यू कैन टेक प्लेसमेंट्स। तो हम एक इंटर्नशिप देते हैं, एक प्लेसमेंट देते हैं। Okay, and the second question is, what if a student decide not to proceed with an accepted offer letter? यानी कि स्टूडेंट को ऑफर लेटर आया लेकिन स्टूडेंट अब लगता है कि ये मेरे लिए डिजर्विंग नहीं है या वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर क्या वो आईआईटी मद्रास से सपोर्ट का रिक्वेस्ट कर सकता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है और मुझे लग रहा है आई शुड क्लेरिफाई दैट आल्सो। तो द थिंग इज, सी, सपोज अब एक सिनेरियो आप सोचिए, अ कंपनी हैज कम, यू हैव गॉन थ्रू ऑल द, suppose there were 4 rounds, you went through all the 4 rounds, you cracked the interview, you got the offer letter, and then you're rejecting it, saying some sort of things, whatever it might be, whatever excuse or whatever problem might be there in your side. But अगर आप इस point पे उसको offer को reject कर दे रहे हो, so ये दो तरीके से गलत हो रहा है। एक तो the company side, the company, see, the company time is money. Company is not going to waste their money time on anything. So they are coming here, conducting exams, and they select a candidate, and the candidate rejects now. So what happens कि कंपनी को हमारे, एक तो हो गया कि कंपनी का टाइम वेस्ट हो गया जो हम भी पर्सनली करवाना नहीं चाहेंगे। सेकेंड थिंग हो गया कि हमारे पार्ट पे भी जो हमारी एक क्रेडिबिलिटी है वो भी तो कहीं लूज हो गई ना, कि हमने स्टूडेंट को भेजा, अच्छा उस डिग्री में हम गए थे ऐसे स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए, एंड दे वर लाइक अच्छा हम तो नहीं लेना चाहते हैं, दिस इज अ बैड इंप्रेशन, दे माइट नॉट कम फॉर द सेकंड round. Second round, the yeah. second time they won't come for the second time. So we keeping all these things in mind, it is very important ki if you have applied for an internship, be very mindful, think about it twice, thrice, or how many times you want to think about it, and then only apply. If you just have to reject at the end of the day, then why do you sit for those, waste your time? It's your time waste also. Yeah. It's our time waste also, and on the company front also it's a very negative impression that we give them. And so also yes, that's why we don't. Yeah, and also किसी स्टूडेंट का चांस भी आपने नहीं लिया, लेकिन मे बी दैट जॉब कैन बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर समवन एल्स। यस यस, बिल्कुल श्रीराम, आप ये बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो कोई और ले जाता ना जिसको शायद बहुत जरूरत था उसका, सो आपने उसका भी सीट ले लिया और फिर ऐसा भी कर दिया। सो दिस इज द रीजन। यस, अगर वो एक बार इंटर्नशिप का उसको ऑफर मिल जाता है एंड वो नहीं लेते हैं वो ऑफर, तो अब उन्हें कोई असिस्टेंस नहीं दिया जाएगा। एंड सेम विद प्लेसमेंट। Yes, same with placement. Okay. This question is repeated. If a student secure an internship in their 3rd year or 2nd year, will they still be eligible for apprenticeship or internship in the 4th year? And what is the difference between internship and apprenticeship? See, apprenticeship. See, the difference between internship and apprenticeship is that in internship, the company, suppose you get an internship, the company is not liable to send us any report. Okay. But in case of an apprenticeship, there are some credit transfers which are done in the BS level.
So what happens in there? What happens there is that whichever company you are doing the apprenticeship for, that company has to send a report to IIT weekly. So we receive, so IIT receives a weekly report from the company as well. So this is basically kind of, the student is working and IIT is also getting a hold of what the student is doing there, because we are giving credit on based on that. So ये इस तरह से डिफरेंट है कि आप उसको क्रेडिट में ट्रांसफर करवा सकते हो, और एक वीकली रिपोर्ट आपको कंपनी को भेजना होता है. एनीबडी जो भी है, टीम लीड है उनकी तरफ से या जो भी है, that person has to send a report, a weekly report to that person. Okay, this person has done this, and this is how he has progressed so far. ये भेजना पड़ेगा. ओके, मतलब कि किसी भी पर्सन ने अगर ज्वाइन किया जाए अप्रेंटिसशिप में, तो कंपनी उसके हर वीक का रिकॉर्ड भेजने वाली है कि इसने ये प्रोग्रेस किया या इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये इनका परफॉर्मेंस है, ये इनका ग्रोथ है ना, हर तरह से. और एक चीज, हाँ, और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, जो बहुत लोगों का और क्वेश्चन होता है कि अगर वो लोग अप्रेंटिसशिप खुद से ढूंढ रहे हो कहीं से बाहर से, तो एक प्रॉब्लम होता है कि द कंपनी शुड बी लिस्टेड. आप किसी भी कंपनी में जाकर ये रैंडमली यू कांट डू अप्रेंटिसशिप. द कंपनी हैज टू बी लिस्टेड इन आवर लिस्ट, एंड इफ इट इज लिस्टेड तो आप वहां पे अप्रेंटिसशिप कर सकते हो. देन IIT talks with them. The IIC is, again, let me just give the abbreviation. IIC is Industry Interaction Cell, like we are SPC, Student Placement Council. We represent the Student Placement Council. Similarly, you have Industry Interaction Cell. They then get in connection with the company, and then that's how they think, okay, this company is listed in our list. Then you can do the apprenticeship from there. तो ये सिर्फ अप्रेंटिसशिप के लिए है ना, इंटर्नशिप के लिए नहीं. इंटर्नशिप हम किसी भी कंपनी के साथ कर सकते हैं. इंटर्नशिप तो हाँ. और अगर किसी स्टूडेंट ने इंटर्नशिप कर लिया तो क्या वो फिर अप्रेंटिसशिप के लिए IIT मद्रास में बैठ सकता है ना, ट्राई कर सकता है विद द लिस्टेड कंपनीज. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ TA जॉब्स ऑन एनी स्टूडेंट्स प्रोफाइल ड्यूरिंग internship or placement? और TA, teaching assistant, does give a boost to your CV, है ना. If you have done TA-ship, then it shows that you had that credibility, and you've been selected, you have been representing, you actually took a lot of responsibilities on your shoulder. So of course that does give an edge, and apart from giving an edge through the CV, you learn a lot. अगर आप TA हो तो you learn a lot, you gain a lot of experience. आप जो भी पढ़े हो उसको actually जाकर के किसी और को पढ़ा रहे हो अगर आप, या समझा रहे हो, तो of course that again clears your mind more, so you learn more. Just क्योंकि if you're going to teach somebody, आपको पता है कि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकती है, तो अगेन आपको भी बूस्ट करना होता है. तो बहुत सारे आप खुद भी बहुत कुछ सीख रहे हो उससे. Of course that is giving you an edge, of course. And one question related to this: how to become TA, and what is the CGPA limit for the teaching assistant? See, for TA, actually a mail will be there after each term ends. So basically, or just before the term ends, like suppose this is our September term, तो इस टर्म के दिसंबर वगैरह में या जनवरी में there will be a form which will be circulated based on the different subjects, like आप मान लीजिए स्टैट्स 2 का हो गया या किसी भी कोर्सेज का आपको मिल सकता है, एक मेल आएगा. तो इन दैट मेल जनरली पहले तो वो 8 था CGPA, अभी 8.5. आपको 8.5 एंड हायर CGPA रखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू हैव S in that particular subject course which you are choosing for. तो उसके बाद क्या कंफर्म होता है कुछ स्टूडेंट का? आपका इंटरव्यू होता है. अच्छा, उसके बाद तो आपने फॉर्म भर दिया, तो उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी. अगर आप सिलेक्शन हो गए तो आपका इंटरव्यू होगा, एंड इंस्ट्रक्टर्स, कोर्स इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, एंड इफ यू पास दैट, एक बेसिक नॉलेज चेक करते हैं वो लोग. तो चेक करने के बाद अगर आप पास हो गए तो देन यू बिकम द टीम. और उसके बाद कोई यहाँ पे लिमिटेशन होता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट कोई लिया जाता है एज अ TA? डिपेंड करता है वो कोर्स का कितना, लाइक वो कोर्स कितना हेवी है या उनको कितने TA चाहिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. और स्टार्ट ये कब से होता है? डिप्लोमा से और BSc लेवल से? आप डिप्लोमा से भी कर सकते हो, क्योंकि आप इफ यू हैव कंप्लीटेड सपोज स्टैट्स 2 और आपका S है, तो यू कैन देन अप्लाई इन द नेक्स्ट टर्म, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो. ओके. और व्हाट आर द पर्क्स फॉर TA? इट्स करेंटली 10K. या तो बट आपको कैंपस में जाके more than 10K you have the opportunities to live in campus and interact with all the professors. Yes, this is interact with professors, and yeah, it's actually a great experience. If you want to gain an experience, of course that is good, but yeah, it's 10K. You have to stay there
in the campus, and then accommodation is managed by IIT, or we have to pay? Accommodation is given by IIT, but actually you have to pay for it. Okay. Thank you so much जी. Okay, so we have now questions from the CGPA. कि मान लेते हैं हमारे पास एक स्टूडेंट है जो कि किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका है, देन ये इसके इंटर्नशिप और प्लेसमेंट को कैसे इफेक्ट करने वाला है. यहाँ पे ये हो सकता है कि आइदर स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल किया है या उसका एक टर्म खराब है एंड देन उसने अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट शो किया है. लेट्स से कि एक में फेल हो गया, देन वो 8 से ऊपर जा रहा है, 8.5 से ऊपर जा रहा है. तो क्या एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट इंटर्नशिप जो एक सब्जेक्ट या एक टर्म में वो फेल किया था उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनरली कंपनीज ट्रांसक्रिप्ट तो मांगती नहीं है. ओके, ठीक है. तो आपके पास दिखाने के लिए क्या होगा, जस्ट आपका सीजीपीए, या पर्टिकुलरली जिस कोर्स के लिए अगर बहुत ज्यादा हो गया तो जिस कोर्स के लिए कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मांग ले कि आपका क्या था, तो जो आपको मिला वही ना. मैं एक एग्जांपल देती हूं. सपोज इट वाज पाइथन, यू फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, आपने सेकंड टाइम दिया, यू गॉट एन एस, सो दैट एस इज व्हाट इज मैटरिंग राइट नाउ, इजंट इट? नाउ आपने क्या किया, दैट डजंट मैटर, सो डोंट थिंक अबाउट दैट. इंप्रूवमेंट इज ऑल व्हाट इज इंपॉर्टेंट. और जो हमारे फाइनल ट्रांसक्रिप्ट मिलेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, फाउंडेशन, डिप्लोमा या बीएससी, बीएस, तो उसमें क्या लिखा रहता है कि हम किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, मतलब हमने इम्प्रूवमेंट किया? प्रिसाइसली देखिए मेंशन तो रहता है, बिकॉज अगर इफ यू हैव सीन द ट्रांसक्रिप्ट तो आपको हर टर्म वाइज आपने क्या क्या किया है वो एक आ जाता है, आपके पास एक चला जाता है हर टर्म वाइज क्या होता है, लेकिन वो जरूरत कोई मांगता नहीं, पीपल डोंट आस्क फॉर दैट. सो वो उस तरफ से कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहो. ओके. और देखो जो भी है ना, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि सपोज समथिंग हैज हैपेंड, किसी कारण से आपका वो पेपर खराब हो गया, यू कैन सिट एंड क्राई फॉर इट, इजंट इट? That's another waste of time. What you have to do is improve yourself. If you have got an S after failing in a subject, I think you have done a tremendous amount of improvement. So I think this improvement from failing to an S is like achievement. That's an achievement. This is the achievement. Yeah, you have to come out of your comfort zone. And that thus says that okay, you can improve. You have that potential in you. So उसके लिए you don't have to bog down yourself or something like that. और ये एक पॉजिटिव साइन है स्टूडेंट के ग्रोथ के लिए, खुद के मोटिवेशन के लिए भी. एंड डज सीजीपीए रियली इफेक्ट्स प्लेसमेंट? और क्या क्राइटेरिया है अभी हमारे सीजीपीए रिलेटेड प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के लिए? इसमें ना देयर आर आई वुड से मेनी पैरामीटर्स टू इट. I just cannot answer this in one go that matter करता है नहीं करता, इस तरह से आंसर नहीं कर सकते. Completely depends on the company that is coming. ठीक है. कुछ कंपनी अच्छी कंपनीज, आई एम टेलिंग यू, लाइक हम लोग इतने महीने में बहुत सारे कंपनीज को डील किए हैं. कुछ कंपनीज हैव गॉट नथिंग टू डू विद आपका क्या सीजीपीए है. दे जस्ट क्लियरली, एक तो कंपनी आई थी जिसने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि मुझे कोई परवाह ही नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट सीजीपीए दे हैव. I just don't care about that, and I don't want those bookworms. I want people who have clear understanding. It was in that company was hiring based on DL and LLM. So उन लोगों ने मुझे clearly बोल दिया they should have clear understanding of the neural networks and the how it is working and everything, the transformer architecture. I want that. I don't care about what CGPA they have or how good they are and how. I just don't care. तुम लोगों ने तो मना ही कर दिया था. ठीक है. अब क्या होता है ना, कुछ कंपनीज आती है who are actually very particular about this now. अब वो मेंशन कर देती है कि हमें 8 CGPA के ऊपर चाहिए, 8.5 CGPA के ऊपर चाहिए. So अगर आप लोग मुझसे पूछो कि CGPA is the end of it all, तो नहीं, it's not, because most companies अभी they don't care, but yes, there are some companies which do care. So if you just want to be on the safer side, तो आई वुड से 8 के ऊपर रखो या 8 के 8.5 के 8.5 एंड अबव, तो दैट्स गुड, लाइक गुड एनफ. ओके, 8 के ऊपर इट्स ओके. ठीक है. मोस्ट ऑफ द कंपनीज उसी के अराउंड मांगती है. बहुत ज्यादा कुछ हो गया तो 8.5 आप रख लीजिए. एंड और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि सी द पीपल हु डोंट हैव देयर सीजीपीएस क्लोज टू 8, पीपल हु हैव क्लोज टू 8 लाइक 7 के आसपास हैं, और if you can improve, if you have time, if you can improve, please improve, because yes, having a good CGPA just it boosts your morale as well. When आप लिख रहे हो, बहुत लोग LinkedIn पे लिख देते हैं, अपनी CV पे लिख देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं it gives you a sense of self confidence as well.
तो एक आपको उसके लिए भी चाहिए होता है, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू हैव गुड ग्रेड्स ऑन योर ट्रांसक्रिप्ट या सीवी, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव गुड ग्रेड। दूसरा चीज मैं बोलूंगी कि अगर नेक्स्ट बीइंग द प्लेसमेंट काउंसिल, आई हैव सीन कुछ कंपनीज में सिलेक्शंस ऐसे हुए हैं जहां पे देयर इज अ 9 पॉइंटर, he did not get selected, and there was a person with 6.79 CGPA, that person got selected. So अपने आप को इस दुख में रोने से कुछ नहीं होगा, आप अपने आप को ये दिखाओ कि इवन आई एम बेटर इन स्किल्स, I'm better than that person who's having a 9 CGPA, I'm better than that person. So if you can prove, see company क्या मांगती है, what you can bring to the table, isn't it? So if you in the interview, if you can show them that this is what I can bring to you, and the 9 pointer is not able to, if you impress them, your game is done. You don't have to care about anything else apart from that. That means there is no criteria from the IIT Madras side. This criteria is set by the company who comes to the internship and placement round. Yes, of course. It's completely based on the company that we are dealing with. And if the company asks that we don't matter, they will just focus on the skill of the student. And if you have passed the interview, that's it. Now I want you to explain the placement process. Let's say I am a third year student. Now I want to apply for the placement. What are the key focus, key pillars that a company will expect that students should have? That will be different, like communication or anything. See, it's a blend of a lot of things. The first thing is that some company comes with a lot of rounds, so you have to clear those rounds. Suppose you clear an aptitude round, then is some technical rounds, then is the HR round. So there are many rounds which you have to clear. So Can first you of all, can you explain about all the rounds, like what happens in aptitude rounds? What type of questions? See, in aptitude, there will be some aptitude questions. Like I'm just giving you an example. Like there will be questions on data. See, it's like you will be getting questions on like Venn diagrams, logical reasoning type of questions. So these will be there in the aptitude. So there are many places, we were just discussing in the open session also about this. So there are many sites where you can practice. Like one is the Naukri, one where you can, if you want to practice for aptitude, there are multiple sites where you can go and give aptitude test. Even the other day I was going through the Geeks for Geeks. So they have a separate list of all the questions that can be asked in the aptitude. So you can prepare yourself from there as well. And that is pretty good. The Geeks for Geeks one is very good. So so that's how you prepare for the interview rounds, and that is very important. You know, people generally neglect this thing. They are learning all the machine learning algorithms and all the DSA problems and all, and then they don't pay focus, you know, they don't give focus to this. Because aptitude is very important. This is sometimes the first round of any interview rounds. You might not have for some, you might not have for some in the companies, but most of the companies, good companies, generally ask for it. So keep preparing for that also side by side. So apart from this, you might be knowing a lot of things. The thing is that you have to chill. Let me give you an example. Suppose there are many profiles. See, we are in the domain of data science. Our degree is BS in data science and application. So we are very lucky to have a lot of roles here. You can have data scientist role, you have data analyst, you can have data engineering, cloud architect. There are many more. Okay. So what you do is, my suggestion would be, after going through like what my experience in the council has taught me so far, I would say do one thing: select a particular role that you're interested in. If you think data analyst is something which is, you know, I am good at doing, and I think I want to get myself placed for a data analyst role. So what I was giving you, I was giving you an example on how to start your placement preparation. So for that, what you do, you select few roles. Like suppose you select two roles. One is your data analyst and the other is your data engineering. This is just for an example. Okay. Now what you do, you read about these roles. What are the key skills I need to develop? Suppose in data analyst, what do you need? You need to have a command on Excel. You need to have a command on some data visualization tool like Power BI or Tableau, whatever it is. Okay, you should know analysis. You should be good with interpretation, like whatever data analysis you have done, you should be good at interpreting that. So these are just some of the basic things that you have to know about the data analyst role. So what do you do? After you have listed down, okay, these are the two roles I'm interested in, and what are the skills that I need to develop if I'm preparing for this role. Suppose you go for data engineering, then of course you have to like a cloud computing you have to do. You have to deal with big data warehousing, all those things. So now you focus there. Like our course, related to our course, I think for data analyst, everything is covered.
Yeah. Everything is covered. The data visualization part is also like if you take an elective called data visualization and design, so you have the Power BI also done there. So our course completes on. For data engineering also similarly, we have DBMS, we have the DSA thing, we have machine learning and all those things, MAD 1, MAD 2. So these are all helpful for you there. So you now narrow down your like skills that you need to develop and what you have to study. Now based on that, keep preparing yourself. Now, see, I understand that many people then ask this question that should we, like whatever is taught in this degree, should we like go have in-depth knowledge of everything in this course? So see, this is what I'm asking you. You have to narrow down yourself to few roles that you are seeking for. So suppose these are the two roles. So you have to narrow down. You have to have in-depth knowledge in these fields at least. Suppose it is an ML engineering role, then you have to have in-depth knowledge of whatever ML engineering role requires. Okay, so that is there. That is important. Now, see, I'll tell you after this, you have gained all the knowledge from here, and our courses teaches most of it. So after you pass the BSc level, I would say, you can just try for some end-to-end projects. Okay. Now, the thing is how to find an end-to-end project. See, we are doing a lot of projects in our diploma already. So a lot of projects, if you do it thoroughly, then a lot of skills are already acquired by you. Now, how do you find an end-to-end project? YouTube. GPT is there to guide you also. So we have so many things at our leverage at this point. So go to YouTube, search data analyst end-to-end project. So try to shortlist few of them, do one project on that. Okay, so you have an experience there. Suppose for data engineering, you do something of that sort. So build some project. Now, because understanding is not everything, the practical implementation is very important. And that, especially in our field. And that will differentiate you from others competitors. Yes. Because many 9-pointers will come, but very few will have many projects or very good projects. Yes. Now, as I was telling you, then and the key thing is, you have to keep trying. Even suppose you have done so much. Yeah. And you have done so much, and at the end of the day, you have been trying it at so many places, and still you get like rejected. I know many people are also worried about that, because I have seen people facing rejections multiple times who are very good. Like sometimes I myself am surprised how this person, like we have few shortlisted candidates. They are appearing for some companies, and like I'm pretty sure this guy is going to get like selected. But to my surprise, that guy was not selected. But he had equipped knowledge in that field. But so it's also about how you convey yourself. Yeah. So you also have to work on that, because you might be having a lot of experiences and a lot of knowledge, but at the end, when it's dealing with the interviewer, you have to explain that. Like for example, if I give you an example, very easy example I'll give you, so that even the foundation level students can understand this. Yeah. Suppose they ask you about dictionary. You know dictionary. What is a dictionary in Python? You have used it multiple times. But if somebody is asking you, explain me what is dictionary and how do you use it and what is it, you are not able to explain that. Is it that you don't know about it? No, it's not like that. You know about it. You have worked on multiple projects, but what is it? You're just not able to convey those into your words. So how do you do when you are studying something, when you're preparing for your placement? If you struggle with that conveying is a problem for you, sit there and try to think in your mind, or even voice out loudly. There's no problem with that when you're preparing for yourself. So you say, like, you recall yourself, okay, what is a dictionary? It's an inbuilt data type in Python. Then it can be it can be changed also. The dictionary is what? These are basically some unordered key value pair. Store the pair of key value. Yeah. So unordered key value pair. So what? You tell yourself these things. So these will in one sense be good for you also. You are also having a better understanding of the thing, and this will be better at when the interviewer are asking you some question, you will be better at conveying those things to them. I know these are difficult, but you have to go through all these things, because
at the end of the day, it's survival of the fittest, as Darwin says it. So you have to struggle to get somewhere. If you really want to achieve something, you have to have sleepless nights for that. And see, one more thing regarding the depth of how much you should learn. The role that you're applying for, you should have in-depth knowledge in that. Because the employer, basically, they often prefer depth over the breadth. Okay. I have very good quote कि मैंने सुना था बहुत सारे डेवलपर का, यानी सिंह इन यूएसए या हरकिरत भैया का सुना था. उन्होंने बोला था कि यू शुड हैव नॉलेज इन द टी शेप. आप जिस रोल के लिए कर रहे हो उसमें आपकी डेप्थ होना चाहिए और साइड बाय साइड भी आपको कुछ कुछ नॉलेज होना चाहिए. यस, वही मैं भी आगे बोलने वाली थी कि आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, उसके लिए आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको लाइक सपोज यू आर गोइंग टुवर्ड्स द डेटा साइंस रोल, सो आप क्या करिए, जो प्रोग्रामिंग साइड है हमारा, उसमें भी एक आपका एवरेज नॉलेज रखिए. ऐसा नहीं कि जस्ट ब्लैंक. कभी कभी मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग रोल के लिए आपको डेटा साइंस की जरूरत पड़ती है. यू डोंट हैव टू एस डेटा DSA. You don't have to ace DSA for a data scientist role or something, but you have to have an average knowledge. Knowledge आना चाहिए, logic आना चाहिए. मगर अगर आप डेवलपर साइड में हो तो you have to ace. बहुत ही अच्छी तरह से आपने गाइड किया कि किस तरह से स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए. तो सबसे पहले है कि एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज इज इनफ. एंड देन सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपने रोल को नैरो डाउन करना चाहिए, 2 से 3 रोल. एंड देन उसके की पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए कि अच्छा, अगर इस रोल के लिए इंडस्ट्री क्या डिमांड करती है, फिर स्पेसिफिक रोल्स पे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए. एंड देन उसके साथ आपने जो भी 4 साल में कुछ कुछ पढ़ा, उसका नॉलेज नॉर्मल तो रहना चाहिए, है ना. इन डेप्थ रहे या नहीं, इन डेप्थ आपके रोल के अकॉर्डिंग रहना चाहिए और साथ में आपके पास नॉलेज रहना चाहिए आपने जो पढ़ा है. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द कंपनी एंड द HR. और इसके बाद और कौन कौन से राउंड के पार्ट होते हैं? आप फर्स्ट वन, बहुत सारी कंपनीज डिफरेंट चीजें मांगती है. जैसे अभी मैंने आपको बोला, जनरली 4 राउंड ही होते हैं. ठीक है, आपको एक मान लीजिए टेक्निकल राउंड हुआ जहाँ पे कोडिंग, आपको पाइथन, एक तो मैंने एप्टीट्यूड बता दिया. एक आपका कोडिंग राउंड हो सकता है जहाँ पे आपसे DSA, SQL, इन सब चीजों के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. फिर एक HR राउंड होता है, दे गिव यू अ रियल वर्ल्ड क्वेश्चन एंड देन आपको एक्सप्लेन करना होता है उनको. फिर कुछ इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जहाँ पे दे फर्स्ट गिव यू एन असाइनमेंट. जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको एक असाइनमेंट दिया जाता है, वो उस असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं. फिर जिनका असाइनमेंट अच्छा होता है उनको वो सिलेक्ट करते हैं एंड देन दे डायरेक्टली कम फॉर द HR. तो सारी कंपनीज पे एक्चुअली ये डिफर करता है. हाँ, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की कंपनीज है. यस, ओके, थैंक यू सो मच. एक और क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 2 कोर्सेज ले रहे हैं अभी से, है ना, 2 या 3 कोर्सेज ले रहे हैं. तो डज इट रियली इफेक्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योरसेल्फ टुवर्ड्स द कंपनी कि आपने 2 कोर्स सिर्फ लिया है या आपने स्टार्टिंग में जो फाउंडेशन है आपने 1.5 से 2 साल में कंप्लीट किया है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है आपको प्रेजेंटेशन या आपको प्रोफाइल पे? सी, एक चीज तो मैं बोलूंगी, देखिए हमारा जो डिग्री है इसमें आपको बहुत ज्यादा लेवरेज है कि आप उसको 8 साल या 3 या 8 साल का, तो आपके पास ये लेवरेज है. लेकिन पर्सनली इफ यू आर समबडी हु इज फ्रेशर एंड सीकिंग फॉर जॉब, तो मैं पर्सनली मैं बोलूं, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि आपको दिस इज अ 4-year डिग्री, है ना, तो आपको 4 years में इसको कंप्लीट करना चाहिए ना. आप डिसाइड कर लीजिए, आप अगर डिप्लोमा में 5 टर्म ले रहे हो तो आप BSc में 2 टर्म ले लीजिए. जैसे आप अगर फाउंडेशन में 3 टर्म ले रहे हो तो आप डिप्लोमा थोड़ा सा हार्ड है, अगर किसी को लग रहा है मैं 5 टर्म ले पाऊंगा तो आप 5 टर्म लेकर के BSc और BS को 2 टर्म भी कर लीजिए. तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है. लेकिन हाँ, फिर भी मैं बोलूंगी कि आप थोड़ा सा कोशिश करो कि 4 years के स्पैन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाए. प्रोजेक्ट्स को लेकर के ही जनरली लोग पीछे रह जाते हैं डिप्लोमा में. सो BSc is not the 3rd year, that is the BSc and the BS level, the 4th level is not a great headache if once you have passed the diploma. So diploma is the place where you can get stuck, and majorly because of the projects. So have a clear focus. Abhi to aapke paas you people have this leverage of having the mentors. If you think you have big ideas about the project and you are not able to proceed further, so have yourself a mentor who aapko guide kar dega. So any kind of guidance is good for you, है ना. तो आप उस तरह से थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स पे ध्यान रख करके कर लीजिए. बट आई विल पर्सनली सजेस्ट यू कि आप 4 साल से ज्यादा मत करिए, बिकॉज आप जब उस पे देते हैं ना कि आपने, जैसे आई हैव जॉइंड इन May 2021, सो आई गिव लाइक इट्स May 2021 तो मेरा अप्रैल में 2021 में खत्म, 2025 में खत्म हो जाएगा. तो वैसे आप
और ये अच्छा भी लगता है, इस कंपनी को सीरियसनेस पता चलता है। हाँ। सबसे पहले कंपनी देख रही है कि हाइब्रिड डिग्री है, एक ऑनलाइन डिग्री, उसमें भी अगर आप उस डिग्री को 6 से 7 साल लगा रहे हैं, दैट गिव यू नेगेटिव इंप्रेशन ना, क्योंकि किसी भी को भी एक डिसिप्लिन स्टूडेंट या डिसिप्लिन एम्प्लॉय रखना पसंद करेगा कोई भी। एक मैं जरूर बात बोलना चाहूंगा कि बीएस डिग्री के बारे में जो सबसे अच्छा मुझे लगता है कि सबसे पहला मुझे अच्छा लगा था कि जब मैं क्वालिफायर देना गया था तो मेरे साथ 30 टू 40 ईयर के एज के लोग थे जो कि इस एग्जाम को दे रहे थे, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि फॉर द पीपल ओवर 30 who are switching domains and pursuing the BS degree to enter data science, how challenging is it for them to secure a job as a fresher? यानी कि वो डोमेन को स्विच कर रहे हैं, डाटा साइंस में फ्रेशर हैं, बट दे आर एक्चुअली स्विचिंग द डोमेन। सी पहली बात है कि आई विल एड्रेस दैट कि आपने जो भी बोला कि यू सी पीपल हियर फ्रॉम डिफरेंट एज, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिग्री। सो इस डिग्री को रखा ही गया था इस वजह से कि पीपल कैन गेन नॉलेज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द नेशन। लाइक knowledge should not be like people should not be deprived of knowledge. Yeah, knowledge should not be, quality knowledge should not be confined. And Yes, this is the quality dream. knowledge people should not be deprived of the quality knowledge even at any corner of the country. So ये basic motive था हमारे मतलब इस degree का, which is like I think first initiative taken by IIT Madras, and I really appreciate that. I think we should all appreciate this thing. But हाँ थोड़ा सा आपने जो भी बोला ऑनलाइन देख करके एंड ऑल, सी द वर्चुअल चीज का जो चीज हो जा रहा है कि एज बालाजी सर को मैंने बोलते हुए सुना था ये चीज, आई वुड वांट टू कोट इट, नॉट मे बी कंप्लीटली, ही सेड दैट लोगों ने अभी तक हमारे स्टूडेंट्स को टेस्ट नहीं किया। सो द इंडस्ट्रीज हैव नॉट टेस्टेड आवर स्टूडेंट कि कितने रिगरस प्रोसेस से गुजरे हैं, सो इसीलिए दे आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ नोशन। सो अभी तक पहली बैच भी नहीं निकली है हमारी, फर्स्ट बैच अभी निकलेगी। सो लेट देम फर्स्ट गो देयर, इंडस्ट्री को तब पता चलेगा कि अच्छा क्या चीज है, क्या करिकुलम से ये लोग निकल के आ रहे हैं। So since they have not tested our student yet, so they can have different kind of notions at this point of time. Maybe the notion we are the ones who are responsible to change this notion. And it's one of the reason कि या और इस पॉइंट से मैं एकदम रिलेट करता हूँ दीदी, क्योंकि ये एक रीजन था जब मैंने अपने YouTube चैनल को स्टार्ट किया था तो मैंने अपना पिक नहीं लगाया था, और अभी भी मेरे प्रोफाइल में पिक नहीं है YouTube चैनल पे, बिकॉज मुझे लगा कि अगर मैं जेनजी IITian में अपना पिक लगा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, और ये इनसिक्योरिटी के कारण मैंने एक नॉर्मल पिक लगाया था और फिर मैं उसको कभी चेंज नहीं कर पाया। लेकिन बहुत लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि दे फील बैड व्हेन दिस ऑनलाइन वर्ड इज यूज्ड फॉर देम, तो आई डोंट नो आई शुड नेम एनी colleges that way or not, but there's a top 10 college which is a private college, मैं नाम नहीं ले रही, everybody knows, एक top 10 college में है जो एक private college है, क्या उसे बॉदर होता है कि हमें कोई private बोल दे? Because नहीं, there is another college, I am from West Bengal, like the top notch college of West Bengal, वो state का ही college है वो, so तो उसको जादवपुर यूनिवर्सिटी it is, it is a state college, it is not IIT. So क्या जादवपुर यूनिवर्सिटी को फर्क पड़ता है कि people don't call them IITians? No, because they know their worth, they know how good they are. So उन्हें वो सब टैक्स की जरूरत नहीं है। सी अभी we are concerned about it because अभी वही जो मैंने बोला ना, हमारे प्रोडक्ट्स को अभी टेस्ट नहीं किया गया है कि हमारा करिकुलम कितना रिगरस है। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि अगर ऐसा बुरा फील हो भी रहा है तो ये रियलिटी है, फैक्ट है, वी शुड नॉट, मतलब हमें बहुत अपने आप को वैसा बुरा फील करवाने की जरूरत नहीं है या भागना नहीं चाहिए इससे। द थिंग इज कि एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि वी हैव टू हायर फ्रॉम द BS IIT मद्रास, ये कंपनीज के दिमाग में होना चाहिए, तब हमारे साथ अगर वो टैग लग भी गया ना तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इट्स ओके, वी आर ऑनलाइन, सो व्हाट, वी आर द बेस्ट इन द कंट्री। सो अगर इस तरह का, एंड दैट इज व्हाट आवर स्टूडेंट बॉडी हैज टू डू, दैट इज कंप्लीटली ऑन अस, because that's perfectly that the degree can be online, and even this degree is not online because this degree is a hybrid degree, but the curriculum, but the hard work that we are putting into this degree is more than is far better than any private college or any engineering colleges in India. So, it is better, like this is the best, I have point to point that, and so much information in just a 4-year course. Yes, if you take this course very seriously and be a very serious and studious student, and studious in the sense develop your skills and all those things,
I don't think so. I see this degree making, like a buzz after a few years. It's just, we Yeah. are very much new in the market. So it's very, when you're new, people are like a little bit reluctant to accept you Yeah. because the concept is also very new. But I'm telling you, there will be a time when, we wouldn't even be bothered about having that tag beside us. We will feel proud. Okay, this is the first degree that we have, and we are better than the 90% of the colleges around. So this And I doesn't think matter. And हाँ, yeah, दीदी बोलिए. to answer the 30-40 years old people who are here and how they see, there are job opportunities that we get from companies wherein they ask for 2 years experience, 3 years experience, 8 years experience. So there are working professions who are in their 40s or 50s. So we pass on these kind of offers to them. Yeah. So if they are like already working and have an experience, if they are like in their 40s or 50s, 30s, and they have an experience, then of course they do get opportunities through these profiles. Now, having said, people who are in their 30s or like later years, and they are freshers, it is a little difficult. It's tough. I'll be brutally honest about it, because अब हवा बाजी करके या बड़ी बड़ी बातें करके तो कोई फायदा नहीं है ना. सी जो है मार्केट का सिचुएशन वो यही है कि it will be a little difficult for you. आपके लिए वो डिफिकल्ट होने वाला है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपको नहीं मिलने वाला. So at the end of the day, जो कुछ प्रोफाइल्स है which does not care about what age you are in. So there are आप उन प्रोफाइल्स को कभी-कभी टारगेट करो, अप्लाई करते रहो. So आपके लिए क्या है ना, जो एक maybe a 20-21 year old से आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये. So this will be a little difficult for them, but yes, if you have your skills so good that the company is forced to take you, then of course you can have a opportunity. But do not get disheartened. I'm telling you, कब कहाँ कैसे मौका मिल जाए, you never know. I have seen people completely standalone, completely average, in their 30s, making it big time. So वो बस आप अगर हालत छोड़ दोगे ना, if you leave your work somewhere, if you think, okay, I'm not going to get because I'm in my mid 30s or mid 40s or mid 50s, तब तो हो ही गया. For this, I have great quote. Like, just be prepared. If the opportunity comes, just grab it. Just grab it. Yeah. And you never know how how the opportunity is going to come. You never know. So you have to keep yourself prepared all times. Since you don't have an option, if you don't have an option, this is the only option you have to. As I said, survival of the fittest. Survival, yeah. This is just not in this degree or something, getting placed or something. It's in the common world as well, in the society as well. The fittest survives. You have to make yourself, you have to fit in yourself here, and you have to do everything to fit in yourself. Maybe the 30s and the 40s people have to work in a little more than what others are doing. But it's not that you cannot make it. You can surely make it. It's just a little bit of more hard work that you have to put in. Yeah, that's perfect. What are the opportunities available for the non-coding backgrounds like marketing jobs या finance jobs के लिए भी companies आती है IIT मद्रास BS degree में, या technical jobs के लिए companies आती है? हम जनरली डेटा साइंस या प्रोग्रामिंग पे ही कंपनीज पे ही फोकस करते हैं. मतलब हमारी डिग्री जिस पे है हम उसी पे फोकस करेंगे ना. Of course, yeah. तो अब we won't go and find somebody for some other courses, like अगर सिविल वाला जेडीज तो हम नहीं लेने वाले हैं ना. तो हमारा फोकस जनरली प्रोग्रामिंग साइड में और डेटा साइंस की साइड में ही होता है. Okay, and then the most demanding topic, that what is the placement states of IIT Madras BS Degree, and you can tell about the internship and the placement also. Okay, so year round हमारा placement चल रहा है. So anytime in the year, you people might be doing it. So about the placement rates that you have asked, I would say कि see, this changes every month because ये year round चल रहा है, so this changes every month. And a monthly report is mailed to every student every month. IIC sends a mail to every with the proper report of that month. So you people receive that every month. Yeah. Regarding, and also this is also available in your portal. So if you go to your portal, you'll find it. I wouldn't quote a particular thing here because this changes every month. Because every month new company comes, new thing happens, and it changes every month.
So you can log into your portal and you can see what are the like average package there or whatever is there, what sort of companies are coming. Yeah. And if I can ask you कि एक स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा था, देयर विल बी एनी चांस कि हमारे बीएस डिग्री में बड़ी बड़ी कंपनीज इंटरव्यू लेने के लिए आए, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या इस तरह की कंपनीज? इस स्टूडेंट ने पूछा था। और मैंने उस टाइम ये बोला था कि अगर आईआईटी मद्रास इन सारी कंपनीज को बीएस डिग्री में अलाउ करेगी तो बीटेक वाले स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे। और फिर एक नॉर्मल टॉक्सिक कन्वर्सेशन चला था उसके साथ कि हम भी इतना मेहनत कर रहे हैं, मेरे पास भी स्किल है, आईआईटी मद्रास को अपॉर्चुनिटीज देने में क्या दिक्कत है। तो मैंने बोला था कि इट विल टेक अ टाइम और मे बी इट कांट बी पॉसिबल, लेकिन I am just asking about the possibilities in the future. See, आपने जब भी बोला ना कि it can't be possible, I wouldn't agree with that. Yeah. Being in the placement, like council and tackling the outreach. See, the thing is, अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा. The reason is कि we are very new, ऐसे मैं बोल रही थी ना, we are very new. तो हमें एक trust build करना होगा अभी. तो पहली बैच भी हमारी अभी तक नहीं निकली है. तो एक फर्स्ट बैच हमारा निकले, we go there, we prove. See, कुछ अच्छी कंपनीज तो आ रही है, जैसे I have just mentioned that I wouldn't mention the name of any company, but we have Big Fours recruiting from us. So अगर मैं वो बोलूँ कि if you go there, you prove yourself that कि हम अच्छा कर रहे हैं and we are good to your company, we can actually, like, we are a good product of IIT Madras BS Degree. Why not Google will come? But yes, that will take time, and because बहुत नया है, everything takes time, isn't it? So अभी हमें वो trust gain करना है और वो trust हम ही gain करवा पाएंगे. We are the only ones who are going to the companies, go and work them, give them whatever we have learned from this degree, give them there, so that they understand that they see, being the placement council, I'm telling you, there are companies who have just called me and told me they have hired 2 people from us, and then they called me again and told me that we are very satisfied with the candidates. We would also want to have few more candidates from your place. So that has also happened with us, and it's a good company. So that has also happened with us. So it's not that we are not doing good or something. We are doing. It's about good. Time. It's about time and patience. Guys, understand one thing. I will want to, whoever is watching this, I want to tell that a lot of efforts are, behind the scene. You people might not see it. You just see the outcomes, but a lot of efforts are behind the scene. It's just that, even there are times when we also get, very upset. Something happened and we are very upset with that. Ki, okay, this did not work out. But we are trying our best, and see, market में थोड़ा हमें time लगेगा अपने आप को वो करने में. And I see down the line, the curriculum that we have and how we are progressing and improvising ourselves, I do see ourselves that we'll make something big in the near future. At least that's my personal opinion, being in the placement council, because I see it very closely from this place. So I can actually tell that this degree is going to have a blast in few more years in the future. And I think it will be the biggest replacement for the tier 2, tier 3 engineering colleges, and it should be. I think I shouldn't compare at this point. No, I don't mean with comparing. I mean with the curriculum and the amount of financial you put into any college, and then you put into BS degree, the amount of return you are expecting, it's reality. It's reality. And the one talking thing about the projects that you do, I'm telling you, those projects are gem here. So the projects which you do in the diploma level or even in the degree level, the projects that you do, those are gem actually. Those are what are actually very much industry inclined and what industry actually requires. So you learn a lot of things. See, I have got reviews from people who have been placed somewhere from our degree. They have provided us this review that our course is very helpful, and they are, whatever they are doing in their office is like nothing apart from whatever has been taught here. So everything has been taught here. And the perception of this degree will be changed by the BS degree students. और मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, अगर IIT मद्रास उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है तो इस अपॉर्चुनिटीज से IIT मद्रास को रिटर्न करें रेपुटेशन, अपने वर्क को, अपने हार्ड वर्क को, इसको एक्सप्लॉइट मत करें, है ना. कितने स्टूडेंट्स हैं, इसको एक्सप्लॉइट नहीं करें,
इसको एज अ अपॉर्चुनिटी ले और बैक करे। IIT मद्रास को आप सपोर्ट कीजिए अपने वर्क से कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से अब इसको यूज ये करके आपने आगे बढ़ बहुत सकता अच्छा हूँ। लाइन, बहुत अच्छा लाइन बोला। Yes, if IIT Madras has given you something, you should always do something to pay back to it. In fact, how do you pay back? If a person is placed at a good place, I Yeah, think that is also payback. So that is the prepare payback. yourself. We will be bragging ourselves, okay, our alumni is from this particular place, is in this company. So you do something good for yourself is anyway, good for us. Us in And the sense for and the IIT last Madras line for BS the Degree. all the BS degree student will be, don't compare and complain IIT Madras. Just be patient, give justice to this degree from your side. Why to compare in the first place? No, I no, don't because understand. This conversation, many students ask that. Many I students understand. ask, but I want to say that give justice to this degree from your side. Your efforts should Yes, be 100%. IIT Madras is giving 100% effort. You have heard yes, about the recent collaboration with IIT Roper. That yes, cannot be imagined. That doing a hybrid degree, you will get opportunity to do MS within 1 year in IIT Roper. So they are supporting this degree in every possible way. Now it's your turn. Now it's our turn. yes. Very well said, Shriram. Very well said. Yeah. So thank you so much दीदी इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और आपका कीमती 1 आवर देने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा और मैं Thank आशा you. करूंगा कि स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग प्लेसमेंट एंड उनको एक मोटिवेशन और एक ट्रस्ट मिला होगा कि किस तरह से ये डिग्री उनको हेल्प करने वाली है और किस तरह से हमें अब IIT मद्रास के लिए कुछ करना है। In the last, I would ask about 2 to 3 tips that our students will start doing, whether they are from foundation, diploma, ये सब के लिए हेल्प करना चाहिए कि अगर आप इस डिग्री को कर रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कोडिंग ना करने का प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए। प्लीज कीप कोडिंग कोडिंग एंड कोडिंग। सो पहले अगर आप फाउंडेशन में हैं, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप कोडिंग कोडिंग एंड कोडिंग करो। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट विद दैट। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिट विद अ लैपटॉप एंड स्टार्ट कोडिंग, बट वंस यू गिव few days to it, you'll get used to it. So for foundation people, if you're doing Python, keep coding, keep in touch with those codes, try to learn more of the libraries, what has been taught, and apart from that, what are not taught, please go and explore them. So code. For the diploma student, you have done PDSA, that is programming in data structures and algorithms. So go to LeetCode, go to HackerRank, try solving problems from there. So that would be one thing, and keep practicing, keep in touch with the course, because coding is something which if you stop for a few days, if you lose track, then you're going to forget it. It's just like maths. If you stop doing maths for a few days, you're going to forget the concepts. And then I would say, if you're doing in the developer side, keep practicing the codes there also. Then if you are in a BS level, a BSc or BS level in the degree level, again, keep coding, keep don't forget the SQL or the DBMS thing that you have studied. Keep practicing those things. As I have mentioned, that have a role in your mind, set that role and work for it. Work for And it. Yeah. if there is any help, I'm literally telling you, we are there for you. SPC is always there for you. Write to us, mail to us. We generally try to respond to your mail within 24 hours. IIC is also there. You can also mail IIC with your queries. So we are always there to help you all out. Yeah. Thank you so much, Sriram, for having me here. I really had a great time explaining everything. थैंक यू सो मच दी। बच्चे को बहुत ही अच्छा लगा होगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए और बच्चे का बहुत सारा क्वेश्चंस एंड डाउट स्टूडेंट्स के हेल्प किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट दी। Pleasure is all mine.